I could not sleep again. So, welcome to another Yap session. It is a Saturday and 10:11:34 AM हो रहे हैं. And I honestly don't know what I'm going to talk about in this video, but I'm thinking we're gonna think out loud. Yeah, let's do that. And पहली thought जो मेरे जहन में आ रही है that is crazy कि 3 साल हो गए मुझे इस शहर में मूव हुए and I moved for this very project. And 3 साल में we have made no progress at all. And it's I have my reasons. I have my reasons. Survival. I think यही मेरा पहला और आखिरी reason है. There is this quote by Viktor Frankl that says, a hungry man only has one problem. So yeah, and it's crazy मेरे 3 साल लगे वो problem solve करने में. But yeah, ये भी कहते हैं कि सोचना भी progress होती है, तो I'm gonna count that. I've thought about it every single day. Yeah, it's insane कि आप एक जर्नी पे चलते हो और आप थोड़ा सा आगे जाते हो, आपको पता चलता है यार अच्छा there is a side quest. वो side quest complete करोगे आप, तब आपके आगे के levels unlock होंगे. तो side quest complete कर रहे थे. Now we are getting there. We're getting there. Yeah, other than that, life has been going great. I have been reading books these days. As you know from my previous video, I have been trying to avoid these screens and all. And yeah, I've read recently a book that we can talk about in another video maybe. I've recently started another book which also is a beautiful read. We will talk about that in another video maybe too. I don't want to go deep on books in this one, even though I don't have any other topics. But yeah, जिन दिनों में मैं सो नहीं पाता, इस तरह के दिनों में आज तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं वीडियो भी नहीं बना रहा होता, तो I just lay down on my bed और मैं पड़ा रहता हूँ. बस ये करता हूँ, मैं सो भी नहीं पा रहा होता, बस पड़ा रहता हूँ. I don't even scroll my phone. And another thing, छोटा सा hobby जिसमें आजकल मैं खुद को थोड़ा सा मसरूफ़ कर रहा हूँ, that is making good coffee. So we can talk about that too in some other day. I am just seeing a few birds out there in my balcony. I want to talk about that now. मैं अक्सर जब काम ख़त्म करके when I'm finishing my work and when I'm finishing my day, सुबह के 5-6 बज रहे होते हैं, तो birds start chirping. I actually have a little bird house in my balcony. तो परिंदे चहचहा रहे होते हैं and उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है. मतलब मैं यहाँ से बैठा होता हूँ and I'm listening to those sounds that they make and I'm like wow. But another more beautiful experience is in that birdhouse. परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं, अलग अलग परिंदे अलग अलग टाइम्स पे आके अपने घोंसले बनाते हैं. एंड अ वाइल बैक कुछ परिंदों ने अपना घोंसला बनाया वहाँ पर, एंड वहाँ पर अंडे दिए, एंड देन उन अंडों में से नए परिंदे निकले. When I saw that like whole journey, that gives you a beautiful experience. उसमें when they like अंडे देखे मैंने and I was like wow, एक तो beautiful लग रहे थे अंडे बने, but when I saw those eggs, मेरे माइंड में जो थॉट आई, that thought was how cruel are we. क्योंकि इन अंडों में से निकलने वाले परिंदों को अभी नहीं पता कि किस दुनिया में ये लोग आ रहे हैं, कितनी पोल्यूशन है वहाँ पर जिन आसमानों में इन्होंने उड़ना है, एंड किस तरह के क्रूल लोग हैं जो इनको कैद करेंगे. क्योंकि आई हैव सीन अ फ्यू पीपल जो नॉट टॉकिंग अबाउट दोज जिन्होंने पेट्स रखे होते हैं, वो खाता पीता भी रखते हैं अपने परिंदों को. टॉकिंग अबाउट दोज, कुछ लोग होते हैं जो इन परिंदों को कैद करते हैं, पिंजरे में डालते हैं, देन दे गो टू द मार्केट, और फिर वो आपसे पैसे लेते हैं और उन पैसों के बदले में कुछ परिंदों को वो पैसे सिर्फ इस चीज़ के लेते हैं कि वो उड़ने देते हैं उन परिंदों को. लाइक दे वुड टेक मनी फ्रॉम यू एंड देन दे वुड लेट सम ऑफ दोज बर्ड्स फ्लाई. और फिर आपका दिल और अजीब होता है कि यार इन सारे परिंदों को मैं क्यों ना उड़ा दूँ और मैं उनको और पैसे दूँ. दैट्स अ वे ऑफ मेकिंग मनी. एंड हाउ सेल्फिश वी आर एज ह्यूमंस कि हम लोग इस तरह के काम भी करते हैं. But yeah, I mean, there are a lot of things that we can do about it. We should raise our voices.
And now that I'm thinking about it, मुझे एक और चीज़ जहन में आ रही है that अभी मैंने 2 से 3 thoughts पे jump किया है in a few minutes, and it reminds me of a poster that I made a while back when I was into graphic design a little bit. और उस poster में भी एक quote था Pablo Picasso का, I guess, and the quote said, everything you can imagine is real. And the thought behind that poster was कि आपके माइंड में इतनी थॉट्स होती हैं कि आपका माइंड क्लटर्ड होता है हर तरह की थॉट से, बट स्टिल इफ़ यू फोकस आप कुछ ना कुछ उन थॉट से बना सकते हो. एंड आई मेड अ वर्ड इमेजिन यूजिंग अ लॉट ऑफ रैंडम लाइन्स एंड थॉट्स. तो वो पोस्टर मैं यहाँ पे लगा दूँगा अगर मुझे मिला तो. बट दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो मैं अभी रियल टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. 2 से 3 थॉट्स पर मैंने जंप किया, बट स्टिल रैंडम थॉट्स, एंड इट्स स्टिल कमिंग अप लाइक वेरी वेल, और एक वीडियोस में से बन के निकलेगी. दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल. But yeah, I don't know. I think I've talked enough and yapped enough. So I'll end this here. Nothing important, but just making progress. This video कोई purpose नहीं था. Just felt like it, couldn't sleep. So here we are. See ya in the next yapping session. Not a clear ending, but I hope आप ये जो 2-3 quotes हैं, take these as a lesson from this video. And yeah, maybe another yap session some other day, or we'll talk about books that I read, that I've started reading soon. Bye.